India's farmers' anger spills out onto the streets. Our Annadata cries out for help, but protest after protest is ignored by multiple governments. रण सज चुका है दिल्ली में, अब युद्ध आर पार का होगा। सरकार जब तक हमारे इस पे अमल नहीं करेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हमको करना पड़े। राष्ट्रीय राजमार्गों को घेरने का काम करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं कर दिया जाता, हमारी मांगे मान नहीं ली जाती, 50,000 रुपए का कर्जा माफ नहीं कर दिया जाता। In Rajasthan, despite the massive crackdown by state and police, thousands of farmers took to the streets for the third day in protest, demanding loan waiver, asking for implementation of the Swaminathan Committee report and a fair price for their produce. After facing 2 days of police crackdown, these farmers has now hardened their stand there, and they have announced that from Saturday onwards there would be the complete chakka jam. Not just Rajasthan, farmers from Haryana also took to the streets today. Their cry for help not very different. सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जवान हुआ है, उसका कर्ज मुक्त किया जाए, माफी हम नहीं चाहते। हम सत्ता में आने के बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद हम किसानों के उनकी लागत के आधार पर 50% लाभांश के साथ उनकी फसलों का दाम देंगे। इन दोनों मांगों से सरकार मुकर गई है। Desperate for a fair price for their produce, the farmers say their protests will continue despite the police crackdown. Different farm organizations from across the country who have come together here in Faridabad. There are farmers from Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, many other states who have come here under one umbrella to raise their voice against the kind of problems that the farm community is facing with the kind of agrarian crisis that the country is facing today. Across the nation, farmer anger is rising, yet government after government is playing deaf. On Minute Now, as we continue our campaign to save our farmers, we ask tonight, is there no place for the Annadata in New India? Let's debate. And the farmers of our country have come out onto the streets again. It's government versus farmers. We brought you the story yesterday when the farmers of Rajasthan had been taken into preventive custody to stop their protests. They wound up sitting on the highway outside of Jaipur waiting for their opportunity to enter the city. That protest has now spread to the state of Haryana. Also, we remember that the farmers in Tamil Nadu, the farmers from across the country, are protesting. They are of the opinion that the announcements being made by the government so far are not genuine because there is no roadmap being provided to these farmers. They don't know how any sort of these announcements or these promises will be implemented by the government. Our farmers are angry and their situation has not changed. Why is it that the farmers are still angry despite what was being popularly touted as a farmers' union budget this year, when the finance minister announced a minimum support price for farmers? Why is it our farmers are still upset? Why are they still protesting? And most importantly, why are they still committing suicide? That's the question we have to answer today. Why are they unhappy with the promises made by the government? Joining us on the show, Vaibhav Aggarwal, spokesperson of the BJP. Mahaveer Shastri, farmer leader from the Bharatiya Kisan Sangh. We have Shakti Singh Gol, is the spokesperson of the Congress. Prakash is a farm leader from Tamil Nadu. Sudhir Tiwari is a farm leader from Madhya Pradesh. G. Chandrasekhar is a senior journalist. And Chengal Reddy is a farm leader from the south, joining us in Hyderabad. I welcome all of you to this conversation. Thank you for joining us. Sudhir Tiwari ji, मैं पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ. आप बताइए, गवर्नमेंट ने अभी बजट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट की थी, तो आप लोग उस अनाउंसमेंट से खुश क्यों नहीं है? जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो अनाउंसमेंट की है, वो उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो उनके हिसाब का है. उसमें जो है फार्मर्स उनकी जो फैमिली जो कि काम करती है, उनकी उसमें लेबर इनपुट जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. जो फार्मूला है वो डिफरेंट है. उनके एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बट हमारे एंगल से वो नहीं है. तो उनका कहना था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 टाइम्स आपके कॉस्ट का कैलकुलेशन. बट ये कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? कॉस्ट का कैलकुलेशन ऐसा करा जाता है कि जो उनका बीज की कीमत है, जो खाद की कीमत है, जो डीजल की कीमत है, जो उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखी है,
वो इस हिसाब से उन्होंने वो कर रखा और उसमें 50% ऐड करा जाता है। इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट करा है। बट मेरा ये कहना है कि इसमें जो लेबर जो कॉस्ट है जो दिन पे दिन बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट जो है वो उसको ऐड नहीं करा है। प्लस हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि आपने जब जितने भी आपने वेतन भोगियों के लिए जब आप आयोग बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो 5 आयोग बनाए और छठा आयोग, आई एम सॉरी 4 आयोग बनाए और 5वां आयोग जो था स्वामीनाथन आयोग जो 2006 में बनाया था, आप उसकी रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानते हैं? स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आप क्यों नहीं मान रहे? हमारा सिर्फ उस सरकार से ये पूछना है कि स्वामीनाथन आयोग जो कि आपने 2000 जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो किया था, वादा नंबर 5 में उन्होंने जो उसमें बताया था कि हम जो है किसान की जो आय है उसमें 50%, किसान की जो लागत मूल्य उसमें 50% का प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसको लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2015 में यही केंद्र सरकार ने दिया है कि हम ये जो है हमने जो घोषणा करी थी वो हम लागू नहीं कर सकते। तो ये दोयम दर्जे का दो बातें क्यों? इसमें सरकार की खुद की अविश्वसनीयता हो रही है। जहां तक उन्होंने बजट में मोदी जी ने 2022 में कहा है कि हम उनकी आय जो है दोगुनी करेंगे, बट ये सिर्फ एक प्रकार के चुनाव को देखते हुए। आप मुझे ये बताइए, कल राजस्थान सरकार की एक स्पोक्सपर्सन हमारे स्टूडियो में बैठ के बोल रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान है ही नहीं। देखिए ये तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं। ये तो देखिए, अगर किसी का कोई जवाब नहीं होता तो सिंपल सा एक ही जवाब हो सकता है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी होती कि अपोजिशन की चाल है, भले ही उन्होंने क्राइम किया। अगर कोई, मेरा ये कहना है, अगर कोई अपोजिशन या कोई भी थर्ड पार्टी कुछ बोल रहा है और वो सही बोल रहा है तो आपको मानने में दिक्कत क्या है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि मेन जो है सरकार आजादी के बाद से आज तक 6 लाख से ज्यादा किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। रीजन वाई, क्यों कर चुके हैं आत्महत्या? हमें जो देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, अभी भी हमारा देश कृषि प्रधान देश की श्रेणी में आता है। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे जो पर्सन हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके बारे में आपकी पॉलिसी ढीली है। और जो कॉर्पोरेट, आपको जो चिंता है कॉर्पोरेट हाउसेस की, जिनका 16 लाख करोड़ जो है आपका जो उनका लोन है, उनको आप एनपीए कर रहे हैं और जहां किसान भागने दे रहे हैं, आप देश के बाहर फायदे दे रहे हैं। आप ये बताइए, किसान जो है अन्न पैदा करता है, किसी का कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अन्न पैदा करके बताए मुझे, जो अन्न पैदा करके दे रहे हैं, क्या आप नट बोल्ट खा सकते हैं क्या कोई? आप अन्न खाएंगे? ठीक है, मुझे let me bring in the rest of my panelists at this point. I want to ask Vaibhav Aggarwal, spokesperson of the BJP. Mr. Aggarwal, I have a lot of views from Tamil Nadu, from Hyderabad. I have several people who are going to put forward their views one by one, but I want to understand from you, what is the government's response to this protest now, which is going to, it seems like, spread like wildfire across the country, because it has started in Rajasthan, it has started in Haryana, and I'm assuming, Sudhir ji, it will spread to Madhya Pradesh as well. Right. Mr. Aggarwal, go ahead. Faye, good evening, and good evening to the rest of the panels. Thanks for having me answer this question. I think the government is aptly and very considerately taking care of the policy perspective on this entire issue. And this is not to be dealt with only specifics in terms of the agitation, but it has to be looked at on the whole. You know, the agriculturists feel the way he's feeling, and I'm listening to Sudhirji's statements, and I'm not going to speak anything against his statements. It would be easier if you made your statement in Hindi, though. We are the ruling party. I think I'm answerable to it. So, you can go ahead okay. in English. So, मैं ये समझता हूँ कि किसान भाइयों में इसको थोड़ा सा समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम पिछले 10 साल के किसानों के मरने की या आत्महत्या करने की स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो पिछले 4 साल में घटे हैं। मेरे पास नंबर्स हैं, मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पिछले 4 साल में घटे हैं। फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अगर पॉलिसी के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार जब से आई है तब से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक होलिस्टिक पॉलिसी रूल से देखा जा रहा है।
ये नहीं है कि अच्छा ठीक है आज ये है तो इस पे इशू बना दीजिए, आज ये है तो इस पे अच्छा ठीक है इस पे एक पॉलिसी पास कर दो, बिल पास कर दो या कोई स्टेटमेंट दे दो, अच्छा ये कर दो, ये नहीं है। हो सकता है थोड़ी देरी हो रही हो या लग रही हो, क्योंकि किसानों में, हमारे किसान भाइयों में लैक ऑफ अवेयरनेस भी बहुत है। जो रेगुलर नेशनल मार्केट है उसके अंदर हमारे किसान भाइयों की इंटीग्रेशन भी बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल मैन। सो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इन फैक्टर्स को हमें अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एजिटेशन उस समय आ रहा है जब केंद्र सरकार ने अपने बजट में कमिटमेंट दिया है। हाँ, सारे नेताओं के साथ बातें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि एजिटेशन आज पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है, हमारे कार्यकाल में पिछले 4 साल में भी 2 बार हुआ है, तो और मैसिव तरीके से हुआ है। तो किसान संगठनों के दबाव में आके उन्होंने मैसेज ये दिया है, स्टेटमेंट, और सिर्फ स्टेटमेंट है। हम लोग चाहते हैं कि उसका कंक्रीट, गलती है अगर आप ये सोच रहे हैं तो हमारी सरकार किसी के दबाव में नहीं कोई भी आप अगर पॉलिसी बनाते हो उसका रोड मैप होता है। आप ये मत सोचे कि आप दबाव बना लेंगे तो हम आपसे समझ इस तरीके से आप देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। किसान संगठन जो है पहले, अब अगर आप मेरे को बोलने नहीं देंगे सुधीर जी तो इतने उतावले मत होइए। हमने सुन लिया मैं आज चेन्नई में हूं, लगता है कि देरी थोड़ी सी देरी हो रही है, आपको also ये भी लगता है कि there is a lack of awareness। let me just one second, let me bring in Chengal Reddy की पूरी जानकारी नहीं है, उस हिसाब से आप जो है ना, किसानों की जो है समस्या दूसरी ही है, और अगर किसानों की जो किसान अगर होगा तो वो सही समस्या बता पाएगा। लोन माफ कर दिया राजस्थान सरकार ने, मजाक थोड़ी है। मजाक ये है मिस्टर वैभव अग्रवाल की राजस्थान सरकार जब आप 45,000 20,000 करोड़ ऐसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी सरकार ने 500 करोड़ रुपए प्याज के संधारण के लिए दिया है और 1800 करोड़ रुपए वृक्षारोपण के लिए किया है। अब ये तो देखिए आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़े बोल दो आप 10,000 करोड़ है, पर तो कैसे करोगे आप, हमारा मतलब ये है अगर आपका रोड मैप हमारा क्लियर होता जिससे हम लोग भी समझ पाए कि आप हमारी आय दोगुनी कैसे करेंगे। let me take this to Chengal Reddy। अरे तो अच्छा रुकिए अग्रवाल जी, एक मिनट रुकिए। Chengal Reddy, Mr. Vaibhav Aggarwal is of the opinion that थोड़ी सी देरी है, there's a little bit of delay and there's a lack of awareness among our farmers and there are middlemen who have to be taken into consideration and policy takes time. These are the statements that he made. What's your response to that, Mr. Reddy? Basically, the farm sector issues have become so complex. I don't think there is any point in blaming Mr. Modi or Vijay Scindia, whether it is state central subject. What has happened, if you see in the last 25-30 years, there are number of institutions created to take care of the farmers, right from fixing prices, research institutions, procurement. But all these institutions have failed. Now, the other big confusion in this country is today, it is every day becoming politics. When Mr. Modi came, he said he will implement Swaminathan report. After 4 years, he says, yesterday he came out with a plan and this thing. Now the problem is, see, while we do discuss a lot of things, one thing is very clear. There is a huge dissent amongst the farmers, they are very angry. But the one thing that is saving the nation is this. Farmers are basically fragmented because of linguistic and regional divisions. So therefore, any agitation that is happening, it looks to be location specific. See, last year in Madhya Pradesh, many were killed, and Maharashtra, they stopped milk. And yes, today they have this, Haryana and Rajasthan has started, and in Hyderabad, every day this is happening. Now, what I want to tell my political friends or media journalists is, the country is saved from farmers' anger because farmers are not able to unite. This organization which is now started agitation in Rajasthan and all that, yes, they do a good number of people. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के 90 संगठन, 90 संगठनों ने मिलके किसान महासंघ बनाया है और हमारी जो है रीजनल प्रॉब्लम, hello, please. अरे भाई, don't look. I am not interested to discuss with you, Mr. Whoever you are. I am just not interested in discuss with you. Don't say 190. What I am saying is, you are not. There are whatever you are saying. Farmer is not unite. Look, if that's the answer I am giving you. This man, if you don't want to speak, I am not going to discuss. You ask him to talk. No. Okay, so Mr. Sudhir Tiwari, tell this gentleman. No, yes. Look, please, okay, tell him. Please Tell him this chap. You see, you had Saraj Joshis, you had Tikayevs. Do you think these chaps has today started? Do you think they will take care of the whole damn country? There are 5 lakhs villages and the problems are Humpty number.
Do it, is it more stronger than last year? What has problem happened is in same. UP and The problem is same. They are not getting the I'll tell you. right cost. Let me also bring in, one second. Let's not bigger. I also have G. Chandrasekhar. I am not talking about the farmers. We are not politicians. Mr. G. Chandrasekhar and Mr. Shakti Singh Goyal, I want to bring them in here. One second, gentlemen, 1 second. Let me bring in G. Chandrasekhar. G. Chandrasekhar is a very senior journalist who has been tracking the farm sector for several decades. Mr. G. Chandrasekhar, in your independent opinion, how would you rate the government's response to the farm crisis? I would say it is poor, with due respect to everybody. That's number one. Before the election, there were fancy promises made to agriculturists and the farming community. Now this government has been around for 4 years. 1 year from now, we are going to have elections. In the last 4 years, several dozens of schemes have been announced, but we have no clue what progress has been made in terms of these programs. That's number one. Number two, there are 5 or 6 structural problems for Indian agriculture, and the structural problems continue to stymie agriculture production. I don't think enough attention has been paid to addressing the structural issues. We need to be investing money. I can share with you 4 or 5 very serious structural deficiencies in Indian agriculture. One is we need to strengthen the input delivery system. Second, we need to rapidly expand irrigation. Third, we need to infuse agriculture with technology. 4, we need to invest in rural infrastructure. 5th, we need to build capacity amongst farmers to face market volatility. 6th, we need to use mobile phone, particularly ICT, information and communication technology, to deliver weather information, price information, market information, input related information to growers. I think these are all things that have to be addressed, but I don't think we have made significant progress in the last 4 years. Shakti Singh Goyal is the spokesperson of the Congress. That this government came in. Yes. Shakti Singh Goyal is the spokesperson of the Congress. Mr. Goyal, this is not a problem of today. It's not a problem of 4 years ago. This is a problem that has compounded over several decades. Going into the next election, what are the... look, I'll tell you 2 things. Yes, go ahead. Yes. Now I'll tell you one thing. During 2040 election campaign, Mr. Modi has said, "Kisan ko daam nahi milta, mitron, mera dil jalta hai." He has promised so many things to the farmers. And what has happened after he took over power? In these 4 years, the farmers' situation has gone to dogs. And what was he has promised? He had promised in Gujarat, everywhere when there's a cotton growing, farmers were there. मित्रों 20 किलो कपास का कम से कम आपको 2000 तो मिलना चाहिए. For 20 kg cotton, 2000 minimum the farmers will have to get. During UPA tenure for 10 years, never when the cotton's price went beyond down to 1000 rupees. But in Modi's tenure, what is the situation today? In these 4 years, never farmer got more than 1000 rupees. It went beyond below 1000 rupees. Another thing is that policy. Lots of announcements are made. Making announcement is a different thing, and providing fund in a budget, there's a different thing. And one more aspect is you provide money, then at the end of the year, how much have you spent? Mr. Modi is master in providing money without doing the expenditure. And today the situation is no Jai Jawan, Jai Kisan. That was our slogan. Now today the situation is Mare Jawan, Mare Kisan. And look at the arrogance of Bharatiya Janata Party. In Madhya Pradesh, one of the ministers says, nothing new. Everybody is dying. Farmers will also die. Vaibhav Aggarwal of the BJP will respond. Vaibhav Aggarwal, respond to that, please. See, the idea here is, you see,
I'm very surprised that after Shakti Singh ji's grave loss in Gujarat, where his voice was not heard, he still wants to speak a language which people do not expect. Now, and it's okay. He represents a party's view, but I would like to understand. It is, and he's trying to give it a political look, and I'm trying to debate by not naming people, but he's bringing me to a point where I have to name people, and I probably shame people. 65 years. Who was responsible? If it was Jai Jawan, Jai Kisan, you know, I have some statistics, and I'm gonna say this. Since 1995, I have the statistics. In 1995, every year the situation was improving. Till 2014, and this last few years, the situation is decreasing. Shakti Singh ji, one moment. The farmers suffering. Don't be intolerant. Because of your policies. Don't be intolerant. आप अवार्ड वापसी गैंग की तरह काम मत करिए, बोलने दीजिए मेरे को। जब मैं बोल रहा था मेरी अंग्रेजी आपसे बेहतर है, बाकी सारे पैनलिस्ट के लिए मेरी गुजराती भी शायद आपसे बेहतर है। Understand, farmer is not understanding. This is your arrogance. You know, I think that most governments seem to forget that farmers are not beggars. That farmers are not asking you for anything. They just want their due right. I also have Mahavi Shastri joining us right now. Mahavi Shastri. One second, Mr. Goel. Mahavi Shastri is the leader of the farmer leader from the Bharatiya Kisan Sangh. Shastri ji, आप हमें बताइए आपकी मांगे क्या हैं अभी? किसानों की मांगों के बारे में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिख रखा था। अगर वो अपने घोषणा पत्र को पूरा कर देते हैं तो पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं होगा और आवश्यकता भी नहीं होगी और किसान भी दुखी नहीं होगा, सरकार भी बची रह जाएगी। माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर से जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें लिखा था कृषि भारत के विकास का इंजन है, इसमें सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध होता है, आज इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, इसमें सबसे ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे और किसान को और खेती को बचाने के लिए हम खेती का लागत का 1.5 गुना देंगे किसान को। ये सब चीजें अपने घोषणा पत्र में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उस समय के प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट थे, can I respond to Sudhir on this part, please? No, this is Mr. Mahavi Shastri. अपने घोषणा पत्र को पूरा कर Bharatiya Kisan Sangh, who's telling you that just fulfill your manifesto. I just have one more voice so you can respond to both of them. Prakash is from Tamil Nadu. Right. Prakash, what are your demands? Our demand was not belongs to our state. For our whole country. That was MSP. Yes. Implement the Swaminathan minimum Commission, support price. minimum support price, and second was the right of the bank loan from nationalized bank. Still, already 4 years gone. Still, I'm believe in the Modi sir. He's not a normal personality; he's a unique personality. And then I want to say is that still now I impressed his word. 1 week before also in the exam areas he has spoken that to the parents that. Don't compare with your child with neighborhood child like that. Sure, that was the unique word. In my childhood also, I also conveyed to my mom, but my mom, the age factor has stopped. Like that, he gave some awareness to the farmer. He allowed the farmers to the protest. So many medias, he have the ability to cut this, but he has opened the digital India. He has through the media everything was spreaded. Yes. He has allowed. Yes. I believe he is only the person to do this MSP and then the loan waiver. This is not comes from last 1 year, 2 year problem. We have to blame the Modi sir. This is for the past. My age is 28. Before my birth, these things are happens. Do you want to make your statement in Tamil? You're allowed to do so. We provide a translation. No, you're this okay. is the right one. Okay, you're okay. I want to go back to Mr. Chandrasekhar. Mr. Chandrasekhar, I'm reading off media reports that say, and this is quoting the Prime Minister. Madam, who just 1 second, I want to talk. Yes. Today, one healthy thing was happens. So many people think that Tamil Nadu and Karnataka people was quarreling, farmers. But the reality was the political people only the quarreling. We are not quarreling. Today, in front of the Karnataka people, I spoke in the interview that we are not the enemies. We are friends. We are not Tamil and Kannadan like that. We are belongs to India. In front of them, I says that
our both demand was So give there a is profitable price for an there's a agriculture friendship product. across Yeah. Tamil Nadu and Karnataka farmers And because the MSP like demands that, are the I same. says, But they appreciated me. Mr. Chandrasekhar, just 2 days ago, the Prime Minister made a statement saying the farm sector makeover is on the cards. He was at a conference. He said that he was at a conference. He said he will create additional income for growers. They talked about doubling farm incomes again. He talked about minimum support price. He talked about reducing the costs of fertilizer, increasing productivity, settlement of crop insurance and soil health. Is this the right route, Mr. Chandrasekhar, in your opinion, to solve the problems? Partially, but before that I want to say I'm a little tired of now hearing about this legacy issue. This government keeps talking about legacy, whether it's the banking sector or agriculture or anything else. But when this government came to power, they did not know about these legacy issues, but yet it made fancy promises and it's failed to fulfill these promises. I think we need to accept it, and I think even if somebody from the government were to apologize to the agriculturists or to the nation that sorry, we have spent 4 years now, we have 1 more year, we have not been able to fulfill all the promises, but we are doing our best, etc. I think will an apology satisfy? अगर government ने आपसे माफी मांगी, sorry बोला तो क्या चलेगा? Chengal Reddy, will an apology suffice at this point? Chengal Reddy? That's not the point. I'll come back to you, sir. Chengal Reddy. I just want to open this up to the panel at this point. Chengal Reddy. Don't expect politicians to apologize. No. They are not that magnanimous, whether it is Congress or BJP. Politicians are not magnanimous. Forget about them. My suggestion to Modi will be straight away this. In about 30 days' time, there are certain changes Mr. Modi can bring about. The first one is APMC reforms, which is a simple administrative decision. Linking Manrega with agriculture. Then removing taxes on all agriculture inputs, which Mr. Anna Hazare and all of us been fighting. Now, then using remote sensing and others for technologies. Now, what I wonder, Mr. Modi yesterday had a big meeting of 200 people, prepared a 100-page note and all that. My suggestion to Mr. Modi, and I want to ask BJP government is, don't take us for fools. We are not naive. See, there are administrative decisions, there are policy decisions, there are others. Now you take those which you can do, let us say in 30 days time. Any Tom, Dick and Harry will tell you a simple common sense issue, Mr. Modi. Your government can just on a scribble paper can within 48 hours you can pass these orders. So Vaibhav Aggarwal of the BJP is saying policy takes time. देरी तो लगती है, थोड़ी सी देरी हो रही है. But Chengal Reddy says you have solutions that will take 30 days. BJP people. APMC reform. मेरे पास इसका जवाब है. यदि हम लोग how much time will it take for you to take? No. Mr. Swaminathan, one moment. GST on all agriculture inputs, your cost will come down. You link Manrega, your cost अरे will भाई come down. बोलने तो You allow दीजिए. APMC reforms, the whole middleman मेरे will पे go. चढ़ने का क्या फायदा है चैनल पे? मेरे से आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का उत्तर नहीं देने दे रहे. You are all mental sick people. You are trying to sing your own song. अरे क्या बात Don't कर रहे sing your own song. It's a debate. इसका जवाब दे दो सही. Why don't you take a decision in 15 days? Let's have a discussion. You tell me what is that Mr. Modi can do in 15 days. You won't convince him. Faye, this is not done. No. So Vaibhav Aggarwal, and I will also ask Mr. Goyal to respond to this. Vaibhav Aggarwal, respond. If there are solutions that can be done in 30 days, तो फिर देरी किस बात की? So yeah, please ask the gentleman to keep quiet for 2 minutes. Otherwise, I'll be. Chengal Reddy will listen. We'll listen to him. We'll listen to him on your show. Yes, go ahead, Mr. Aggarwal. Why are we taking so much time? Let that BJP man answer. And be patient. Okay, he's answering. Arey Baba, be patient with me. Give me 2 minutes. So the idea is, let me read out 1 to 10, and I'm not going to beat around the bush here. Let me read out 1 to 10, and I will come to the crux of answering the questions. I have made notes of it, including the political questions. So 1, target for agricultural credit 2017-18 has been fixed at 10 lakh crores. As I was saying, there's lack of awareness. Yes, there is. Farmers will benefit from 60-day interest waiver announced in December 31, 2016. The scheme is already implemented. And I have data to it. I will discuss that with you. Third, government to support NABARD for compensation, computerization and integration for all 63,000 functional primary agriculture credit societies. So there is a loan requirement. We've already sanctioned it.
4. Coverage under Fasal Bima Yojana will be increased from 30% to 40%. Loan is a part. That's covered. Development for 100% coverage of soil testing mini lab. One moment. कृषि विज्ञान केंद्र जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि प्रॉपर सॉल्यूशन, कर्ज मुक्ति और पूरा भाई साहब पे डिसूजो का शो है, ये मछली बाजार नहीं है, ये मछली बाजार नहीं है मिस्टर अग्रवाल, पर आप समझ लीजिए कि किसान के पास और इम्प्लीमेंटेशन इसी कारण नहीं हो पाता है। हमारा जो है देश में जो मूल रूप से जो नीति निर्धारक है, नीति आयोग, उसमें एक भी फार्मर है जो नीति किसानों के लिए बनाने वाले, ऐसे आप जैसे लोग हैं जो किसान फार्मेसी के बारे में जानते नहीं है और फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, फार्मर के लिए बात करेंगे, तो केस का कैसे भला होगा? कनपट्टी पर बंदूक रख के थोड़ी चलाएंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर क्या ऑल इंडिया किसान महासंघ में फाइनेंस मिनिस्टर को जाके कोई वो दिए एक ही नारा दिया है कि कर्ज सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वैभव अग्रवाल का कहना है कि किसानों ने जाके फाइनेंस मिनिस्टर को कोई सजेशन दी ही नहीं। मिस्टर अग्रवाल, प्लीज डू नॉट ऑफेंड माय पैनल, देयर हैव बीन सजेशंस आफ्टर सजेशंस एंड देयर इज अ स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट which is a report of experts. Nobody needs any more suggestions. Please just implement that report. That report is over a decade old. Mr. Goyal, that also responsibility lies with the UPA government. Why are we asking? It is our government. We decided that report should not be implemented. So we will take up whatever parts we want from that report. What is we are the government. We are the decisive authority for the country. That I would like to listen to you. You should allow us to do our role. गवर्नमेंट जो करना चाहे वो करेगी, उसको किसानों से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उसको जो करना है वो करेगी। उसको किसान सुसाइड कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी की आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है, और आपको पॉलिटिक्स की जरूरत है, आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो। Mr. Vaibhav Aggarwal, the arrogance of your answer, I'm very sorry to say. आत्महत्या क्यों कर रहा है? आपने इतनी सारी पॉलिसी बनाई है, आत्महत्या क्यों हो रही है? Let me bring in Mr. Goyal. Mr. Aggarwal, the arrogance of your answer, Mr. Aggarwal, please. We are not politicians. Listen. No, Vaibhav Aggarwal. Do not play politics on the lives of the farmers. Do not do it before you go down that road. You already turned around and said, we are the government, we will decide. I'm sorry, but you are our government. We voted you in. And you will listen to what the citizens are saying. And let me also point out to you, there are more farmers in this country than anybody else. You will listen to what the farmers have to say. Shakti Singh Goyal, what has happened with politics? Are the farmers not enough of a vote bank that no political party cares about the farmers anymore? This is a ridiculous answer. पिछले 65 साल का हिसाब मांगिए ना आप इनसे। अरे 65 साल का हिसाब मांग के ही क्या हमें अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है? मुझे ये बताइए, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है? हम लोग गांधीवादी तरीके से हमारा पलवल से लेकर मार्च से चल रहे हैं और यहाँ आपने फरीदाबाद में हमें बंधक बना दिया गया है, हमारी बात नहीं करने दी जा रही है। तिवारी जी, I'll come back to you. गोयल साहब को बोलने दीजिए। गोयल साहब बोलिए आप। देखिए, दो बातें हैं। हम बिल्कुल दिल से मानते हैं किसान जगत नो तात छे, दैट्स वेरी वेल सेड इन गुजराती, ही इज अ फादर ऑफ यूनिवर्स। अगर किसान कुछ नहीं करेगा तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसान की जगह पे काम नहीं कर सकता है। अब देखिए, यूपीए गवर्नमेंट का अगर वो हिसाब मांगते हैं, वी आर रेडी टू गिव द हिसाब। वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने लोन वेवर किया, हमने किसानों की चिंता की, हमने फिर भी ये नहीं कहा कि हमने सब कुछ किया है। 2006 But your best was not good enough. अपॉइंट करने वाली भी यूपीए गवर्नमेंट, That was not with और good मोदी जी ने intentions. कहा था मुझे सिर्फ 100 दिन दे दो, सिर्फ 100 दिन दे दो मित्रों, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब 100 दिन की जगह अब 4 साल खत्म होने आए और फिर भी बीजेपी स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि पॉलिसी विल टेक इट्स ओन टाइम। Your tenure of the government is for 5 years. भाई साहब, मैं बताता हूं आपको, look at the arrogance of 1995 BJP leaders. 2014 आप किसान की बात सुनते नहीं हो। What was the crop insurance situation? Rajiv Gandhi ji had introduced the crop insurance, and what was the premium for crop किसानों ने insurance? आत्महत्या करी है। पिछले 2 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या करी है?
that if you take the figures, मोदी सरकार ने कितना लोन दिया है, बहुत कुछ मोदी पाया, सरकार ने कितनी सब्सिडी चिल्लाना वेव ऑफ करी है। बहुत आसान है। You know, I want to bring in Mahavi Shastri. I have a question. I have a question for Mahavi Shastri. Yes. और राजीव गांधी जी ने जो क्रॉप इंश्योरेंस No. See, I tell you what, we can keep paddling back into the past. Mr. Goyal and Mr. Agarwal. Mr. Goyal and Mr. Agarwal, but the past is irrelevant. Every farmer who dies is one too many. आपके अलावा बात करने के लिए कुछ और है नहीं। एक मिनट, आप दोनों just take a minute. Nothing new. Just take a चाहे minute. जवान मरे चाहे किसान मरे, Okay. इनकी तो उड़ान योजना है। ठीक है, you know, I don't have the time to talk about the past. I want to know why we are not fixing the problem today. One second, Mr. Goyal, one second. Let me bring in Mahavi Shastri. Mahavi Shastri जी, किसान की तकलीफ होती है जी, तो ये कहते हैं कि तो हो नहीं सकता जी। महावी शास्त्री जी, आप मुझे ये बताइए, अभी वैभव अग्रवाल का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट है, हम बोल देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट हमें इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। उनका ये भी कहना है कि आप लोग आके सजेशन क्यों नहीं देते। इसका आपका क्या जवाब है? हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपने पहले से कह रखा है अपने घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे, और आप हम ये मान के चलते हैं कि जो कहा है या लिखित में आपने आश्वासन दिया है पूरे देश को, तो करेंगे ही। इसके अलावा हमें कहना क्या, हम तो ये कह रहे हैं आपने जो कहा है लिखा है वो पूरा करो। हमें वो पूरा कर दोगे तो हम दूसरा सुझाव देंगे। जो आपने पूरे देश को आश्वासन दिया है लिखित में वो पूरा करें ना, फिर अगला सुझाव तो तब दे जब पहला काम हो गया हो। तो पहली बात यह कि जो कहा वो करें। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेंगे। एक सप्ताह में माननीय वित्त मंत्री जी होते हैं, कृषि राज्य का विषय है, राज्य के जो कृषि विभाग के अधिकारी और राज्य सरकारें इसमें प्रसंज्ञान लेकर के वो उपाय करेंगे कि 2022 तक कृषि आय किसानों की कैसे हो सकती है। तो ये विरोधाभास प्रश्न जो कह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग, उसकी गाइडलाइन, उसका एक रोड मैप, लगता नहीं है कि घोषणा में और मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है यही किसानों के दुख का कारण है। जी बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, चुनाव के वक्त सिर्फ जुमले मैं बताता हूं, आपने बहुत अच्छा किया और मैं आपकी बात का सम्मान रखता हूं, और मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। आप देखिए, मैंने जब माननीय फे डिसूजा ने मेरे से पूछा था कि मेरा क्या स्टैंड है इस पे, मैंने आपको बोला था कि देखिए मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं किसानों का, और ये आप भी मानेंगे किसानों में 4-5 चीजें हैं जो हमारे देश को आज तक किसानों की प्रगति से रोकती आई हैं। क्या क्या है? लैक ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद द मार्केट, इसका मतलब मार्केट के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल है जो कि कम होना पड़ेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि हमें पता ही नहीं था, आज से पहले सॉइल टेस्टिंग लैब थी नहीं, जो कृषि विज्ञान 4 साल तक आप क्या करते रहे? उसके अंदर हमें ये पता चला कि कौन सी सॉइल फर्टिलाइजर। Mr. Vaibhav Aggarwal, there is a list of things that need to be done. मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की थी, minimum support price, focus on, and let me go to G. Chandrasekhar because there isn't a bigger expert about this and he is completely independent. He is not part of any party. G. Chandrasekhar, what is your response to this, to what Mr. Aggarwal is telling us? We are also not belongs to any party. I think this government was voted to power. किसानों का लोन माफ कर रही है, वहाँ दूसरी सरकार दूसरे हरियाणा में वहाँ माफ नहीं कर रही है। देश में एक पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? Let's ask Mr. Chandrasekhar. Mr. Chandrasekhar, सरकार नहीं थी जी, अब आप बीजेपी सरकार केंद्र में है, तब आपके हाथ में सब कुछ है, तब आपने जो कहा था वो क्यों कर नहीं रहे हैं आप, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप किसानों के लिए आप बहुत सारे बजट लेके आए हैं, लुभावने वादे लेके आए हैं, तो वो कैसे करेंगे? हम लोग यही तो चाह रहे हैं कि आप बताएं हमें रोड मैप क्या है आपका 2022 तक। जेटली जी ने जैसे बोला कि हम आपको जो है आपकी आप मेरे किसान भाई है, आपकी दुगनी इनकम करेंगे कर रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री की परंतु किस तरीके से करेंगे? 2 या 3 केंद्रीय योजनाओं के नाम हम लोग आपसे बताइए क्या गलत बोल रहे हैं किसानों के लिए? आप चाह रहे हैं, मैं उसका सम्मान रख रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, मेरे को प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 4 साल में आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है उसमें केवल 2 योजनाओं के नाम मेरे को बता दे। अरे भैया, आपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या बात करते हो? अरे आपको पता ही नहीं है। the farmer debt has just been growing.
is the point that you're making. Yeah, we have to say that in every annual budget for the central government people workers, officials, they have to provide 1.50 lakh crore. As salary. Actually, after a long period, there was a farmer was committed suicide because of the heavy drought happens. The government have to concentrate on this topic and please load wave for 1.42. Okay, Mr. Chandrasekhar. Mr. Chandrasekhar, I interrupted you. Yes, Mr. Chandrasekhar, I interrupt you. Please respond. एक minute, corporate houses के. I'll come back to you. Mr. Chandrasekhar, please go ahead. This government came to power by raising the expectations of people and by making promises. And मैं समझता हूँ अब लोगों को लगता है कि विश्वासघात हो रहा है. I'm sorry to be saying this. There is a certain betrayal. This is a creeping feeling. That's number one. Number two, I have myself as in the Hindu business line over the last so many years, 2 decades, commented extensively on agriculture, on agribusiness, how to strengthen agriculture, how to improve productivity, given a large number of suggestions on a number of occasions, spoken on television channels and conferences, seminars, but I don't think there are people within this government who are willing to learn and willing to apply and willing to implement. Number one. Number two, we are earmarking huge budgetary outlays for various programs, probably several dozen programs. Wait 1 second. Right. So several dozen programs have been announced, but we have no idea what progress these programs have made. We have no idea whether there is any monitoring and evaluation of the projects and the money spent. What is the outcome? We have an outlay budget, but we need an outcome budget. We need proof. We need proof that there is genuine outcome. We don't have that. That is what the government ought to do. Ought to tell the world, tell this country, tell the voters that we have allotted so much money, this is the outcome. And I don't find that at all. You don't find that at all. Let me also go back to Mr. Chengal Reddy. Mr. Chengal Reddy, you've heard what Mr. Aggarwal from the BJP had to say. What is your response to him? See, my response to the present agricultural crisis is whether Mr. Modi or Manmohan Singh, they are irrelevant, because I personally feel as a farmers activist, the failure of entire Indian administration, the institutions, the research institutions, doctors, lawyers and all that, they are equally responsible for this mess created in the farm rural sector. Because we are always talking of blaming Mr. Modi, who came yesterday. He's just there for 4 years. Now, I would put this question, I would like to put this question to all these IAS chaps sitting around Mr. Delhi and Mr. Collectors, Chief Ministers, Chief Secretaries. What the heck they are doing? What is happening with this Food Corporation of India? What is this Indian Council of Agriculture Research Institution people? What about these staff working in research institutions who are drawing a couple of lakhs salary every month? What are they doing? See, the whole problem is the country is in a mess. Our discussion somehow, your own media or me, every one of us, we tend to blame XYZ because, Congress blames Modi and Modi blames Congress. It's nonsense and nothing is going to happen. But one thing definitely is going to happen, I can tell you, assure you. The farmers are boiling. The only question is when it will become a movement. I don't want to call it a revolution, but it can really create the whole national economy and create. I'll tell you a simplest example that my friends in Rajasthan and Haryana from tomorrow they are going to do. They are going to stop milk and vegetable supply to Delhi. And probably next coming 1 or 2 weeks, maybe next month when Hazare Khan, we will stop meat and vegetables and milk every month or every week for 1 day. Then every 15 days, 1 month, if this government, if the people of this organized and intellectual fellows don't understand, we will stop electricity and water for 1 day in a month. Let us say you in Delhi and Bombay and Calcutta, you're a TV and every one of you learn to live without water and electricity for 1 day, 2 days, 3 days. Then you will enjoy the fun. The rest, why I am so furious is, the problem today is not this chap Modi or Rahul Gandhi, all these jokers. The institutions have failed.
I would squarely blame one of the biggest responsibility today lies is this in all India services. These Indian administrative officers who were given constitutional protection, they have become chamchas to politicians, and none of these secretaries at the state, central, district, none of them are able to do. Let me ask Mr. Sudhir Tiwari and Prakash as well. Who are drawing thousands of rupees salary and who are there to expected to serve the farmers. one second. Okay, सुधीर तिवारी जी, क्या ये सच है कि कल या परसों फार्मर एक्टिविस्ट या फार्मर प्रोटेस्ट की ये प्लान है कि आप लोग दूध और सब्जी की सप्लाई बंद करवानी? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है जी। देखिए, राष्ट्रीय किसान महासंघ जो किसानों का पूरे देश के 90 संगठनों को जोड़ के किसान महासंघ बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव कुमार जी कक्का जी जिनको बोलते हैं, उन्होंने एक देशव्यापी कि उन्होंने कहा कि भाई आप मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम, केरल की प्रॉब्लम, तमिलनाडु की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम रीजनल प्रॉब्लम है, उनमें बहुत सारी, बट इसमें कॉमन प्रॉब्लम जो है कि उनको उनकी जो क्रॉप है उसका पूरा दाम नहीं मिल रहा है, और वो जो है सरकार की कुरीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण कर्ज में दबे हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया है, कर्ज मुक्ति और पूरा दाम लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो किसान जो हैं कृषि उपज मंडी फरीदाबाद 16 नंबर सेक्टर में एकत्रित हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि किसानों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता भी नहीं है। हम लोगों ने पलवल से 2-3 दिनों से पलवल से पैदल यात्रा करते करते हम लोग कृषि उपज मंडी आते हैं, वहां हमें बंधक बना लिया जाता है। हमारा मूवमेंट था कि दिल्ली घेराव, उसको डर को देख के उन्होंने हमें बंधक बना लिया, 2 दिन तक हमें बंधक बनाए रखा। अब हमारी रणनीति ये है कि हमारे माननीय शिव कुमार जी कक्का जी ने कहा है कि अब हमारा जो केंद्र बिंदु है फरीदाबाद रहेगा और किसान के सब संगठन वहां एकत्रित होंगे और हमारी निर्णायक लड़ाई रहेगी। इसमें हमारी निर्णायक लड़ाई ये रहेगी कि या तो हमारी मांग मानी जाएगी या तो आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जनता को, या तो आप अपनी मांग मानेंगे। आपकी जो नीतियां हैं, बहुत देख ली अब नीतियां, अब ऐसा नहीं होने देगा। बॉर्डर पे किसान मर रहा है, वो बॉर्डर पे हमारा जवान मर रहा है, खेतों में किसान मर रहा है, क्या है आपके देश की नीतियां? मैं जानना चाहता हूं। जवान की बात मत करिए। मुझे एक चीज बताइए कि कर्ज मुक्ति और पूरा दाम हमारी मेन एक मांग है, आप मानते क्यों नहीं है उस बात को? हमारा एक ही नारा है और पूरे देश के संगठनों का एक ही नारा है, कर्ज मुक्ति और पूरा दाम। आप क्या बात कर रहे हो? If your demands are not met, 15,000 करोड़ इस साल में दिए। आप बार बार मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन की भाषा। I want to speak one second. 15,000 दिए, 10,000 रुपया हम लोग भिखारी है क्या? आप 5,000 दिए, 2,000 दिए। एक मिनट प्रकाश, ये सारे जुमले हैं, कुछ दिया नहीं। First of all, I want one second, sorry. I want to speak in Tamil for 2 words. Yes, go ahead. தமிழனாக தனித்திருப்பதை விட இந்தியனாக இணைந்திருப்பதே எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி. மேடம் கேட்டாங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த போராட்டத்துல எதுவும் நடக்கலன்னா என்ன பண்ண போறீங்கன்னு. Actually what Prakash is saying is that I will stand with Indians. This is not a Tamil fight, this is not a state fight. I am happy to stand with every farmer from India to fight for the same thing. Prakash. Yeah, right. And then I want to say is that we are the farmers. Last 11 years, we succeed many things. We don't come for the Tamil Nadu farmers. We come for the Indian farmers, especially myself. Our leader Ayya Kanu sir do the agitation for the 24 days. After the 24 days, I entered into the agitation. In my mind. Only says that this is the protest for Indian farmers, not is only for the Tamil Nadu farmers. If your demands are not met, what happens then? What is the plan? Right. I says that if our demands are not met, we are just struggling. This is a farmers' ban given by the God. What we have to do? I believe on Modi because positive thinking is must. I think last 4 years many things has changed. Okay. So you want minimum support price. If that is not met, what happens then? If your demand of minimum support price is not met, then what happens? What will you do? You want a farm loan waiver. If that doesn't happen, what will you do? We will continue. Still we continue. You will continue to protest. The same question. Same question to Mr. Mahavir. Mr. Mahavir Shastri जी, आगे जाके अगर आपके मांगों को माने नहीं जाते तो आप क्या करने वाले हैं? भारतीय किसान संघ क्या करने वाले हैं? आपका प्लान क्या है आगे जाके?
देखिए, किसानों को किसी संगठन या राजनीतिक दल या जन संगठनों में अभी विभाजित करने का समय नहीं है। अभी एक ही मांग है, सभी किसानों को उसका जो खर्चा लग रहा है, उत्पादन का लाभ उसकी तुलना में नहीं मिल रहा है, तो वो लाभ मिले। इसके लिए संघर्ष के अलावा किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है। शांतिपूर्वक पूरे देश के किसान अपनी आवाज को मिलाकर के खड़े हों और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, देश की खाद्यान्न संकट को बचाने के लिए, बेरोजगारी को बचाने के लिए और खुशहाली के लिए जो कच्चा माल तैयार होता है प्रत्येक okay, ठीक है, बहुत जरूरी है। I have to wrap up this conversation because we've run out of time, but one thing is very, very clear. In conclusion, I'm sorry, Mr. Chandrasekhar, we'll have another conversation about the farms. But in conclusion, it boils down to one thing: our farmers have united, like Chengal Reddy has been saying for a very long time, under the Bharatiya Kisan Sangh. Our farmers have united. I've run out of time. I've completely run out of time. I have to start another show, but we'll do another conversation. Our farmers have come together across the country. They are no longer being divided. They are no longer being divided by language. They are no longer being divided by state. They are no longer being divided by anything else our politicians might have told them. They have come together, and they are now forming a group outside of the city of Delhi, and they are protesting all for the same thing. It is a voice that can no longer be ignored. These are lives that can no longer be ignored. These are tears that can no longer be ignored. These are families that can no longer be ignored. Remember, when a farmer kills himself, he leaves behind a destitute family that no longer has a bread earner. There are more farmers in our country than doctors or engineers or IT professionals or IAS officers. If not anything else, there are votes that should matter to any government. As our farmers gather together, a Mirror Now campaign to save our farmers stands with them. We stand with the farmers to bring you their voices, because we should live in a country where no farmer has to die ever. It should never happen. The person who puts food on your children's plate as they sit down for dinner tonight should never have to consider the option of suicide. It is a wrong precedent. We have lived with this for too long, and it is high time that we did whatever in our power to make sure it never happens again. And if you're sitting in the city today putting food on your children's plate, then what can you do? Make it part of conversation. Read about it. Understand the problems that our farmers are facing and talk about it. The more we understand, the less we will allow our politicians to sell us dreams. Understand the problems. Make it part of your daily life. We're going to continue to stay with the farmers on this night after night as this protest continues outside of Delhi. We stand with the farmers.